Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in this lecture series of welfare economics, we'll be studying the classical utilitarian function. So it is also known as Benthamite welfare function. तो इसका जो welfare function है, अगर हम बोलें जो utility A individual को मिल रही है और utility जो B को मिल रही है, that is the summation of utilities of all the individual. अगर A और B है तो यहाँ पे दो individuals हो गए, अगर और ज़्यादा होंगे तो दैट देन इट इज़ द समेशन ऑफ ऑल दोज यूटिलिटीज़ एंड आई कैन बी फ्रॉम 1 to n. तो इस केस में तो हमारा होगा फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to 2 विच इज़ द यूटिलिटी जो हमें मिलेगी इंडिविजुअल्स को, अलग अलग इंडिविजुअल्स की यूटिलिटीज़ को ऐड करके. जैसे अगर हम बोलें वेलफेयर जो यूटिलिटी ए कॉमा यूटिलिटी बी की है, दैट इज़ यूटिलिटी ए प्लस यूटिलिटी बी and it can be equal to 100. this is the value जो judgment जो welfare मिल रही है दोनों को इकट्ठे ऐड करके. also it is depicted like this. so this is the ISO welfare function which is like this. it is like this, and if the utility of individuals increases, then this is basically like a budget line. so if the welfare increases or the utilities increases, if utility increases, that means welfare will also increase. so then it will parallelly shift upward, and if utility decreases, then welfare will also decrease, so it will shift down parallelly. सो दैट डिपेंड्स. इसके अंदर हमने जो वेटेज दी है, हर इंडिविजुअल की जो वेटेज है दैट इज़ इक्वल वेटेज दी गई है. इस जो हमारा बेंथम है, इक्वल वेटेज इज गिवन. so that you have to note. And second that we are going to talk about would be the Rawlsian welfare function. Rawlsian, this is Rawlsian welfare function. so here the welfare of individual A and B depends on their utility, and utility that they'll be deriving is a min function. In Rawlsian case, it is a min function of utility A and utility B. so if it is min of 10, 10, then it would be 10. I'm just taking a numerical example just to explain and make it clear to you guys. And if it is 10, 20, then it would be 10. So we can draw this also. The social welfare, the ISO welfare function would look like this. It would be this L-shaped. so it would be like this. At 10, 10, this is the case. And if it is 10, that is X and Y. And if it is here, but since it's a welfare function, so we have to depict the utility of A and utility of B, since we are talking about the utilities of different individual that they are getting. so if it is if A remains 10 and 20 is the case, so in that case we'll get this L-shaped curves, which is the ISO welfare curve. You can write this. This is ISO welfare curve. So this is the alternative to value judgment which is taken by the Rawlsian welfare function. So it is determined by the utility when individual whose utility is minimum, जिसकी utility minimum है, वहाँ से हमारा welfare function जो है वो derive हो रहा है. therefore जो welfare है society की, वो तभी मैक्सिमाइज होगी जहाँ पर जो यूटिलिटी है उस पर्सन की मैक्सिमाइज होगी, जहाँ पर व्हेन दैट इज़ नोन एज, इसको हम मिनी मैक्स भी बोलते हैं. तो उस पर्सन की यूटिलिटी जिसकी मिनिमम, जिसको यूटिलिटी से सेटिस्फैक्शन मिलती है, जब उसकी मैक्सिमाइज होगी तो पूरी सोसाइटी की वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. तो वी हैव टू यूटिलिटी उस इंडिविजुअल की जिसकी मिनिमम यूटिलिटी है, उसकी अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो पूरी सोसाइटी की हमारी वेलफेयर जो है दैट वुड गेट मैक्सिमाइज. And the third that we'll talk about is the Nietzschean welfare function. Yeah.
So this is the welfare function of individual A and B depends on the utility, and utility here is depends on the utility function. The utility function is the max function of utility A and B. So here जो max function के अंदर if I take a numerical example, so 10 so that means 10 is the max function, and if it is 20 comma 10 then in that case 20 हो जाएगा. If it is max 10 comma 30 then in that case 30 हो जाएगा. तो this is also an alternative to value judgment जो कि consider किया गया था by the Nietzschean welfare of the society, which is determined by the utility. अलग अलग individuals की क्या है, and this is in this also the ISO जो हमारा ISO welfare curve है that is inverted, जो हमारा inverted L shaped होता है, that is the case. इसमें हमारा जो ISO welfare function बनता है that is inverted L shaped. इसमें जैसे मैक्सिमम फंक्शन है तो मतलब दिस इज़ ऑल्सो, अब हम अगर करंट पॉलिसी का नाम लें तो जैसे सबका साथ सबका विकास, तो दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल देयर कि सबकी यूटिलिटी इकट्ठे ही मैक्सिमाइज हो जाएगी, सबका साथ सबका विकास. सो ऐसे ही हमारा फोर्थ फंक्शन भी हो सकता है कॉप डगलस, जिसमें वेलफेयर जो है यूटिलिटी ए और यूटिलिटी बी की जो है दैट डिपेंड्स, जब हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं देन दैट इज कॉप डगलस वेर इन जो हमारा आइजो वेलफेयर कर्व है दैट इज कन्वेक्स to the region, and this is utility B, this is utility A, and this is the ISO welfare curve. So the features, so you must have got कि किसमें ISO welfare कैसा है and what is the function. So this was all about the different welfare functions. So thanks for watching. Please do like, share and subscribe to Economics by Vishnu Arpita. And bye bye.